का मतलब भी दैट ही है एंड दास ऑल्सो गिव्स द सेंस ऑफ दैट। और इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में चली जाती है। जितने भी कनेक्टर्स हैं उनमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में चली जाती है। तो यहाँ पे आप जो दास कनेक्टर देख रहे हो उसका यूज कैसे होता है, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो आई टोल्ड यू दैट, आई फाइंड दैट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, आई एम सॉरी दैट, आई बिलीव दैट। तो ऐसे ही जर्मन के अंदर होगा। तो कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं? इश ग्लाउबे दास, इश denke das, I think that, ich finde das, I find that, es ist wichtig das, it is important that, ich bin sicher, I'm sure, ich bin sicher das, es tut mir leid, I'm sorry that. Okay, ich finde es interessant, gut, schlecht, and you can add on das. Es freut mich, das. Es freut mich means I'm happy about it. Okay? Ich habe gehört, I heard, and you can add on das. Ich habe gesagt, das. I told you that. Es ist schade, das. It is pity that. Okay, so in these ways you can use das connector. How? And one more is es ist. There are many. Es ist möglich. Es ist möglich, thus it is possible that. And you know that you can add on the sentences. We are saying these only, otherwise बहुत सारे हैं. तो देखो, ich glaube das, I believe that, ich denke das, I think that, ich finde das, I find that, es ist wichtig das, it is important that, ich bin sicher das, I'm sure that, es tut mir leid das, I'm sorry that, ich finde es interessant, gut, schlecht das. You can add on. Es freut mich das, I'm happy about it, I'm glad about it. Ich habe gehört das, I heard that. Ich habe gesagt das, I told that. Es ist schade, it is pity that. Es ist möglich das, it is possible that. Es ist unmöglich das, and it is not possible that. So in this way you can use all these redemitals and you can add on the informations. How? Ich glaube, dass es heute regnet. Okay, so ich glaube, conjugated verb, as you can see at the end of sentence. So I believe that it will rain today. Ich denke, dass heute nicht kommt. I believe that, I think that he will not come today. Ich finde, das Internet immer nützlich ist. That Internet is always punctual. Es ist wichtig, dass wir nur auf Deutsch sprechen. It is important that we always talk in German. Ich bin sicher, dass Beeinspruchung bestehen kann. I'm sure that he can clear B1 exam. Es tut mir leid, dass. I'm sorry that
Das ich heute nicht kommen kann. I'm sorry that I can't come today. Ich finde es interessant. Ich finde es gut. Ich finde es schlecht. Das. So ich finde es interessant, dass ich Deutsch lerne. I find it is interesting that I'm learning German. Es freut mich, dass ich morgen, tomorrow, einen Besuch habe. I am happy about it that tomorrow I am having, regnen means to rain. So, es freut mich, dass ich morgen einen Besuch habe. I am happy about it that tomorrow I am having a visit. Next one, ich habe gehört, dass Paul und Julia bald heiraten. Heiraten means to get married. I heard that Paul and Julia will get married soon. तो यहाँ सभी टाइप के सेंटेंसेस मैं बना रहा हूँ और सभी में आप ये देख सकते हो कि कॉन्जुगेटेड जो वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मॉडल वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो ट्रेन बार हो, सब के सब वर्ब्स आखिरी में जा रहे हैं, अंडरलाइंड है. Ich habe gesagt, dass wir heute nicht zur Party gehen. I have told that we will not go to the party. Es ist schade, dass du deine B1-Prüfung nicht bestanden hast. Here you know that we have targeted, हमने टारगेट किया पास्ट को, कि it is pity dass du deine B1-Prüfung nicht bestanden hast, that you didn't clear your B1 एग्जाम. और हास्ट आखिरी में आया है, क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेंटेंस बनाया है वो परफेक्ट टेंस के अंदर बनाया है, और परफेक्ट में आपको पता है कि हाबन या साइन का कॉन्जुगेशन होता है, तो हमने हाबन के कॉन्जुगेशन को आखिरी में लिया है. Es ist möglich, dass der Zug heute pünktlich kommt. Pünktlich ankommt. It is possible that the train today reach punctually. अनकॉमन इज ए ट्रेन बार वर्ब. तो देखो हमने यहाँ पे दास के अंदर सारे कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस को टारगेट किया है. प्रेजेंट को भी किया है, परफेक्ट को भी किया है, मॉडल वर्ब को भी किया है, ट्रेन बार को भी किया है. कैसे? यहाँ पे मेन वर्ब है और कॉन्जुगेशन एस के अकॉर्डिंग टी है. यहाँ एयर सब्जेक्ट है, कॉन्जुगेशन एयर के अकॉर्डिंग कॉम्ट है. यहाँ इंटरनेट के अकॉर्डिंग इस्ट है. यहाँ वियर के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन पूरी वर्ब है. यहाँ एयर थर्ड पर्सन है तो कान है, क्योंकि थर्ड पर्सन में आपको पता है क्यों में कान आता है. यहाँ पे इश सब्जेक्ट है तो हमने कान कर रखा है. यहाँ पे इश सब्जेक्ट है तो हमने लेन ने ई एंडिंग लगा रखी है. यहाँ पे इश जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हाबा आ रखा है. यहाँ पे पाउल और यूलिया जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो हाइराटन पूरी वर्ब आ रखी है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में पूरी वर्ब आती है ना जब आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ में करते हो कॉन्जुगेशन. यहाँ भी प्लूरल है, वियर है, तो पूरी वर्ब आ रखी है. यहाँ पे दू सब्जेक्ट है, दू सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हास्टा है, और ये परफेक्ट भी था, बेस स्टैंडर्ड परफेक्ट के अंदर है, और हाबन का कॉन्जुगेशन हास्टा आखिरी में है. यहाँ पे देयर सुख जो है वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन होने की वजह से यहाँ पे टी एंडिंग है. और इवन जो अन है वो ट्रेन बार भी है. अनकॉमन एक ट्रेन बार वर्ब है, उसके बावजूद भी यहाँ पे हमने सेपरेशन नहीं किया है, क्योंकि जब भी आप कनेक्टर से सेंटेंसेस बनाते हो, जो सेंटेंस आपका कनेक्टर से कनेक्टेड होता है वो हमेशा वर्ब को आखिरी में लेके जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का सेंटेंस हो, किसी भी कैटेगरी का, उसमें जो कॉन्जुगेट हो रहा है वो आखिरी में जाएगा. अब चाहे वो दास हो, चाहे वो वाइल कनेक्टर हो, चाहे वो वैन कनेक्टर हो, बस आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है. बच्चों की जो मिस्टेक होती है वो मैंने आप लोगों को यहाँ अंडरलाइन कर दी है. वो क्या मिस्टेक करते हैं? सब्जेक्ट क्या लगा रहे हैं? कॉन्जुगेशन गलत कर रहे हैं आखिरी में. सब्जेक्ट क्या लगा रहे हैं? आखिरी में ले जाके कॉन्जुगेशन को गलत कर रहे हैं. सब्जेक्ट क्या लगा रहे हैं? आखिरी में कॉन्जुगेशन क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में बना रहे हैं तो कॉन्जुगेशन, पास्ट में बना रहे हैं तो कॉन्जुगेशन,
मॉडल वर्ब से बना रहे हैं तो कॉन्जुगेशन, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। और ये कुछ फ्रेजेस हैं, और भी फ्रेजेस हैं, बट हमने इतने ही टारगेट किए हैं अभी। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि जब आपको मौका मिले राइटिंग के अंदर, स्पीकिंग के अंदर इनको यूज करने का, तो उनको यूज करो। आप चाहो तो घर पे आराम से हर पे 5-5 10-10 सेंटेंसेस बनाओ। इस पे ग्लाउब दास, आई बिलीव दैट, आप इंग्लिश में कितना बोलते हो, आई फाइंड दैट, तो उसके अंदर 7 8 10 सेंटेंसेस बनाओ, चेक करवाओ, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्या होगा उससे कि आप अभी सही हो जाओगे। बच्चा क्या करता है, खुद से कोई प्रैक्टिस नहीं करता, और क्या करेगा, यहाँ अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की, नोटबुक के अंदर डेली लिख रहे हो, कर रहे हो, एग्जाम से पहले की बात बता रहा हूँ, एक एक 2 2 महीने पहले, और अगर डायरेक्ट वहां जाके लिखोगे तो डेफिनेटली आपकी मिस्टेक रेडी है वहां पे। तो प्लीज इनको डेली सेंटेंसेस बनाओ, उससे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी और आपका एग्जाम भी 100% निकलेगा। ओके, so ich glaube, dass es heute regnet. So I believe that it will rain today. Ich denke, dass heute nicht kommt. So I think he will not come today. Ich finde, das Internet immer nützlich ist. I find that Internet is always useful. Es ist wichtig. It is important, dass wir nur auf Deutsch sprechen, that we only talk in German. Ich bin sicher, dass beeinspruchung bestehen kann. He can clear B1 exam. Es tut mir leid, dass ich heute nicht kommen kann. I'm sorry that I can't come today. Ich finde es interessant, gut, schlecht, dass ich Deutsch lerne, that I'm learning German. Es freut mich, dass ich morgen einen Besuch habe. I'm happy about it that I'm having visit tomorrow. I heard, dass Paul und Julia bald heiraten. They will get married soon. Ich habe gesagt, dass wir heute nicht zur Party gehen. I have told that, okay, we will not go to the party. Es ist schade, dass du deine B1-Prüfung nicht bestanden hast. That you haven't cleared your B1 exam. Es ist möglich, dass der Zug heute pünktlich ankommt. It is possible that the train will come today or arrive today punctual. So in all of the sentences, conjugated verb is at the end and thus connector is giving the sense of that.